इसको पहले तो it is highly required to that we should grow in I said that river banks, क्योंकि after cutting it we should submerge in the water. उसके बाद कट करने के बाद आपको इंडस्ट्रीज को चाहिए क्या, उसके थ्रेड चाहिए ना. So when we submerge in the water, that will absorb the water and they will become what? Thicker. And then there I said that layers slowly and slowly started coming out. Yes or not? We can what? By beating and all, we can remove their what is it, that thread. और आपने देखा होगा लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, वो घुमाते रहते हैं, रस्सियां बनाते रहते हैं जैसे. So I said that the jute, and then I am talking about कि उसको पानी में submerge and वहीं से waterway transportation मिल जाए. River will provide waterway transportation and बगल में ही industry. So most of the industries were at the bank of the river itself. Another I said that most of the industries. So which transportation we need? Waterway, the cheapest. But there is an, if it is not there, then we should try to go for what I said that. We should try to go for, यदि मुझे नहीं है क्योंकि इसको एनर्जी भी डिमांड है. दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्ड व्हाट इज एन एनर्जी? थर्मल पावर प्लांट. और थर्मल पावर प्लांट कहाँ होना चाहिए? नियर बाई कोल रिजर्व. इट शुड बी नियर बाई, क्योंकि हम जितना कोल से दूर जाएंगे तो कोल ट्रांसपोर्टेशन विल बी मोर एंड देन जूट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी लेस. तो अदरवाइज वी शुड ट्राई टू लोकेट नियर टू द व्हाट? एनर्जी सेक्टर. लेकिन बट जनरली इफ यू सी इन द बंगाल एंड देन बिहार, नियर बाई रीजन आई सेड दैट कोल रिजर्व. झारखंड, यू नो दैट in Bengal, Raniganj coalfield, you know that already it is available. So there is no need to what I said that and the problem is there. So I said that so the energy is available and that most of the, I said that all along the Hooghly river, I said that all along the Hooghly river, there is, I said that large number of what? Jute textile industries are available. Understood? And they are taking energy from the Raniganj coal and the thermal power plant. याद है ना कोल कहाँ पे है? Yes, in the West Bengal there is an Raniganj coal field. If I am talking about that, I said if it is an I said that Bengal and the Hooghly river is going on and there is a Raniganj coal field, the thermal power plant, and the industries are located on the either side of the what? Hooghly river. And the largest, you can think of 70 to 80% of the what is in a jute, it is growing in which region? West Bengal. I said that all along the Hooghly river, and then the nearby thermal power plant is also available, and then I said that a raw material is available, that is in a jute, and then water is available, and then I said that transportation, and it is in a which one? National waterway 1 it is. Which I said that? National waterway 1 itself. We can go to the directly हम लोग यहाँ कोलकाता से I said that we'll reach to what? Haldia port and we can what is it? Export it also. So water and then यहाँ से हम लोग लिए and then यहाँ transport लिया. Understood? This is the way that we can be able to see. And the labor कहाँ से मिल जाएगा? That is in Jharkhand, Bihar, Odisha and itself Bengali. सारे यहाँ पर भरे पड़े हैं. I said the cheap labor we can be able to get. Yes, this is then again it has been completely what is able to favorable for it. And another I said that we can be able to see in the Bihar if you'll go in Bihar, again these rivers are there. And then this national waterway 1 कहाँ से start होता है? It is starting from Allahabad, Banaras, understood? Then Patna, then it is coming to Farakka, and then it is coming till Haldia. So the Bihar maybe this is I said that national waterway 1. Nearby I said that coal reserve. There is a coal reserve, and then I said that the water available it is there, and then all the condition जो है वो available है, cheap labor is available. Therefore we can be able to grow. लेकिन एक चीज है यहाँ पर कि I said that इसका डिमांड क्या है? कम है. Its demand is less. ये हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. समझ में आ गया? What are the conditions required for the jute textile industry? And which one is the number 1? Same way. Bengal, then Bihar, then I said that Assam, and then Andhra Pradesh. Other states are also growing, but comparatively less. Or you know that it is an eco-friendly also. Instead of using plastic, we should use what?
Yes. अच्छा हम लोग अच्छा if you'll see that if I'll come and if I'll talk to you that jute को आप लोगों ने कहाँ यूज होते हुए देखा है? jute related things, where have you seen that in the use? Huh? Where have you seen it is in the use? Packaging, and especially which packaging? Sacks के form में packaging you have seen that? Yes. On sacks के form में if you have seen like, तो आपने उसमें sacks में rice, maybe I said that wheat, maybe I said that there is an sugar, salt, ये सारे क्या this one is good या synthetic sack is good? Jute sack is good or synthetic sack is good? Huh? Why synthetic? सिंथेटिक सैक में यदि आप चीनी डाल दिया, शुगर डाल दिया तो मॉइस्चर तो अंदर जाएगा नहीं तो चीनी क्या हो जाता है, बहुत सारा खराब हो जाएगा. सॉल्ट विल आल्सो गेट एंड देन अंदर मॉइस्चर जाएगा तो अदर राइस व्हीट आल्सो स्टार्टेड. सो इट इज और ट्रांसपोर्टेशन में बीच में आप लेके जा रहे हो चीनी और बारिश हो गया तो फिर गए काम से. So many things are there. So I said that moisture is the major problem. Another I said that in the after coming of what is the synthetic things, synthetic fibers coming आने के वजह से I said that the demand in the jute in the world, everyone is coming to India taking jute. But due to coming of our synthetic fibers and synthetic plastics and all, we have reduced the use of this I said jute related products. एक तो एक रीजन ये हो गया कि इंटरनेशनल मार्केट में सिंथेटिक फाइबर से इसका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. अनदर वी हैव बीन एबल टू सी लाइक आई सेड दैट इसकी कोई डिफरेंट वेराइटीज अवेलेबल नहीं है. वी डू नॉट हैव वेराइटीज. जब तक हमारे पास केवल बोरे के रूप में यूज करेंगे एंड वील सी इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग रोप्स एंड ऑल, तो इसका डिमांड बढ़ेगा नहीं. राइट नाउ स्टार्टेड फाइंडिंग इट इज गोइंग इनटू द I said that it is in a biodegradable. आप कभी दुकान में जा रहे हो तो आपको कौन सा बैग दिया जा रहा है, तो इसकी वैरायटी को इंक्रीज कर दिया. इट इज एन जूट मेड बैग. थोड़ा सा ज्यादा भर गया तो गिर भी जाता है टूट कर. तो जूट मेड बैग दैट यू आर एबल टू सी. एंड देन गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग स्ट्रिक्ट लॉ टू यूज दैट. आपने सुना होगा प्लास्टिक को हटाओ, यूज द व्हाट इज इन जूट बैग्स. एंड देन जूट बैग्स को जब हम लोग वैरायटी यूज करेंगे in the if will coming into the houses, jute से बना हुआ I said that carpet instead of synthetic made. Understood? So when we'll increase the variety, then sometimes हम लोग उसके वो नहीं पहन सकते, कपड़े नहीं पहन सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ऐसे करते रहेंगे. So I said that it is also known as a golden fiber, and I said that फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन इन द हुगली बेसिन. यदि हुगली बेसिन की बात करें तो यही सेम रहेगा. वहां पे क्या है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया ऑल अलोंग द व्हाट इज न हुगली रिवर अपने आप में क्या है, जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है. प्रॉक्सिमिटी, इनएक्सपेंसिव वाटरवे ट्रांसपोर्ट. विच वाटरवे वन. अनदर वी हैव सीन सपोर्ट ऑफ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवेज एंड फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स. और यदि हम लोग आ गए रिवर में, कोलकाता पे आ गए, थोड़ा सा अंदर में वो मिल है तो दैट हम लोग उसको उठाएंगे रेलवेज एंड रोडवेज से, विल सेंड इट टू द नियर बाई रीजन. सो देयर इज एन आल्सो गुड कनेक्टिविटी ऑफ अदर ट्रांसपोर्टेशन. एबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट. जूट को प्रोसेस करने के लिए पानी में भीगा होना चाहिए, यस और नॉट, एंड देन इट विल गिव मोर फाइबर्स, फुलते जाएगा. चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड देन बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश. There is an I said that they will provide. Kolkata is a large urban center और साथ में फाइनेंशियल सेक्टर इज देयर. ये किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ करने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा होना चाहिए. एंड पावर सप्लाई फ्रॉम द नियर बाई थर्मल पावर प्लांट. समझ में आ गया? यही 4 फैक्टर 5 फैक्टर्स है. एंड देयरफॉर जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इट इज नंबर 1. विच वन? जूट प्रोडक्शन एरिया एज वेल एज जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कौन सा है नंबर 1? West Bengal, then Bihar, then Assam, and then I said which one I said? Andhra. And I said that it is also providing, it's a significance if you dekhoge, I said that providing around 3 lakhs people, I said that employment. How much? I said that 3 lakh people are getting around
employment, I said the jute industry supports around 2.6 lakh people employment directly, but supports another 40 lakhs small and marginal farmers. Means that छोटे farmers होते हैं बहुत small and marginal जिनके पास land hardly they have what is in a half बीघा 1 बीघा land. तो they always, आप यहाँ पे जितने भी workers दिल्ली में आप देखते होंगे रिक्शा वाले and all, they are most of them are marginal farmers. उनके पास land कितना है? आधा बीघा, clear, less than 1 बीघा and all, marginal farmers. और उनसे उनके घर नहीं चल सकते. उनके घर में how many kids they are having? I said that 4 to 5 and 6 kids are there. And then therefore during the, instead of I said that जब growing season नहीं होता है, then okay sowing season होता है, thereafter they come to Delhi and then doing some work, then for 1 month they used to go for sowing season में दोबारा and cutting season में, rest of the season they used to live in Delhi to earn it. So if I said that कि they are available as in a what, labor here and there, they are available as labor here and there. So this reason तो आप लोग देख सकते हो कि तो हमें ये सारे they supports another, तो farmers भी मिल गए, आप पूरा farmer लोग involved है, understood? Marginal farmers, and generally मैंने ये बोला कि marginal farmers are not getting their what, if the Modi government has talked about okay will increase their income by 2 times, यदि ऐसा होता है कि their migration from the rural areas will reduce to the urban areas. दिल्ली में जितने भी आप देख रहे हो ये सारे चीजें जो है ये कौन है? People, marginal farmers are there, small and marginal farmers. सारे ये migrated हैं, they are leaving their houses, and I have talked to the so many, I said that they generally you not happy to live in Delhi, they miss their family and all, except few, I said that. So therefore they used to think to what is going to go in that reason. यदि उनकी income को increase कर दिया जाए, I said that then automatically they will love to live in what I said that in their own reason. Understood it? So we have been able to see that इसका significance आपने देखा, importance देखा कि बहुत सारे population को directly है, indirectly farmers are getting what is in a 40 lakhs, and then largest producer of raw jute and jute goods, and at second place in the export after Bangladesh. Understood? तो significance में आपने देखा कि how it is in a directly, इसके related कई लोग नहीं जुड़े हुए हैं, jute से related lots of people are not involved. Some kind of machineries are also involved, but it is in a what is in a very raw industry. यदि इसके अंदर scientific use किया जाए और इसको improve किया जाए, इसका project किया जाए world market में और India market में, इसके different qualities को, then it can be very much in the coming times highly what I said that amount of entrepreneur can enter into it. They can use सभी जगह, आप ये ले जाओ वो ले जाओ, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा सा और भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए. अभी भी लोग प्लास्टिक में ही ले रहे हैं सामान. समटाइम्स एक बैग पूरा स्ट्रिक्ट हो गए तो लोग प्लास्टिक देना बंद कर दिया था. अगेन देखो इट अगेन स्टार्टेड कमिंग ऑफ व्हाट. सो आई सेड दैट समझ में आ गया हाउ मच डायरेक्टली पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट. 2.6 means 3 lakhs around, and another I said that it is in a 40 lakhs around farmers are, and it is in a second after Bangladesh. And then if I am talking about which are the countries who are what is in a jute producing countries in the world after Bangladesh and India. So Bangladesh, you know that is in a number 1, and then India is number 2, and then a part of it I am talking about Philippines is there, and then I said that Thailand. कौन कौन सा मैंने बोला? India, and I said that I talked about which one? So Bangladesh, then I said that India, Philippines, and then Thailand. These are the reason. After that we can be able to see the Brazil. Understood? So these are the some, and Egypt, and the some reason in the deltaic zone, Egypt, they are also growing. I said that jute. So these are the countries which are, I said that producing jutes. Can you understand in your mind? I said that, which one I said that? The Bangladesh, India, Philippines, Thailand, Brazil, Egypt, ये सारे countries हैं. Understood? They are producing jute in the world. Understood? तो एक चीज आप लोग ये जान चुके होंगे, तो गवर्नमेंट शुड मेक एन स्ट्रिक्ट लॉ फॉर use it. Yes or not? Mandatory. It should be made mandatory to the people to use it, because plastics are what is not environmentally what environment friendly. Not it is eco friendly, not environment friendly.
So I said that what are the challenges faced by the jute industry in India? Jute industry, क्या changes? If it is the question is, I said that evaluate jute industry in India. तो आपको एक तो उसके सिग्निफिकेंस को बताना होगा. आपने देखा पॉपुलेशन एंड हाउ, यस, एंड देन कितने पॉपुलेशन है और कहाँ पे वर्ल्ड में रैंकिंग है. देन सिग्निफिकेंस बताने के बाद हाउ मेनी फार्मर्स आर आल्सो देयर. द सिग्निफिकेंस बताने के बाद यू विल कम ऑन टू, आई सेड दैट चैलेंजेस, ड्रॉबैक्स. तो इवैल्यूएट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव वी हैव टू टॉक अबाउट, एंड देन व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग. सो गवर्नमेंट पॉलिसी. So the first point I said that is stiff competition in the international market from the synthetic substitutes. ये तो समझ में आ चुका है. Therefore the people started moving toward this. And then stiff competition from other country, like I said that Bangladesh, Philippines, Thailand, Brazil, Egypt and all. Understood? And then the internal demand needs to be increased. पहला एक और चीज है कि हमें internal demand बहुत increase करना होगा when the government will make it mandatory. However, it has increased recently due to the government policy of mandatory use of jute packaging. Different. Understood? तो पहला हम लोगों ने इसका प्रॉब्लम देखा कि the first problem that we have seen synthetic, second international market which are also giving competition, and the second हमारा internal demand बहुत कम है. Understood? Then we are saying jute farmer needs to get good prices for their jute crops. यदि उनको jute crops के लिए नहीं मिलेगा, that is also jute industries are getting problem. यदि उनको raw material नहीं मिलेगा, तो jute industry will also get stopped. Yes or no? Jute farmer should give in what is in a good price. यदि उनको price मिलेगा, they will keep on producing. यदि उनको price, if you are not getting, then the jute industry will stop. And jute industry will stop, then the jute products will not be in the market. And the government जो चाहता है कि degradable substance should be there, degradable packaging should be there, package in the market instead of plastic, then उसका वो सपना भी बेकार हो जाएगा. So this is the way that it can be, India can be, what is made it compulsory. अभी आप जाओगे बाहर के देशों में, अभी भी they